Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all will be fine. Today our lecture is elimination of a variable from two equations. At least two equations are required for elimination of one variable. There are different methods of elimination, but today we discuss only one method, that is elimination of variable from two equations by substitution. In this method इस वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, हम उसकी वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं और उसको बाद में किसी भी इक्वेशन में पुट करके उस वैल्यू को हम जो है वो अपना रिक्वायर्ड जो नंबर होता है, रिक्वायर्ड हमारे जो सेट होता है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं. एग्जाम्पल 1 हम अपनी यहाँ पे नहीं कर रहे बिकॉज ये सेम एज इट इज़ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 की तरह है जो कि हम करेंगे. और एग्जाम्पल नंबर 2 हम कर रहे हैं एलिमिनेट x फ्रॉम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड lx प्लस m इज इक्वल्स टू 0 बाय सब्सटीट्यूशन मेथड. सो सोल्यूशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड lx प्लस m इज इक्वल्स टू 0 इज आवर सेकेंड इक्वेशन. फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो lx प्लस m इज इक्वल्स टू 0. So here m in positive form when put on other side it must be subtracted and l multiply with x when we put on other side it must be divided. So x is equals to minus m divided by l. Put the value of x in equation 1. ax square plus bx plus c is equals to 0. So by putting value of x, by putting value of x minus m divided by l square plus b into by putting value of x minus m by l plus c is equals to 0. So by multiplying a m square divided by l square minus b m by l plus c is equals to 0. So a m square divided by l square is the minus bm divided by l plus c is equals to 0. Multiply equation by l square on both sides. So a m square minus b lm plus c l square is equals to 0 is our required result. Now moving towards our exercise 6.11. Question number 1. Eliminate x from the following equations by substitution method. हमने एलिमिनेट करना है x को सब्स्टिट्यूशन मेथड से. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम x को जब एलिमिनेट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं किसी भी इक्वेशन में से और उसको हम पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, तो हमारे जो है वो रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ जाता है. सो आवर पार्ट 1 इज ax माइनस b इज इक्वल्स टू 0, cx माइनस d इज इक्वल्स टू 0. नाउ मूविंग टुवर्ड सॉल्यूशन. Given ax minus b is equals to 0 is our first equation and cx minus d is equals to 0 is our second equation. Finding value of x from equation 1. ax minus b is equals to 0. Here minus b is in minus form. When we put on other side sign change. So ax is equals to b. Here a is multiplied with x. When put on other side it must be divided. So x is equals to b divided by a. By putting value of x in equation 2. cx minus d is equals to 0. c into b divided by a by putting value of x minus d is equals to 0. When we multiply c with b divided by a, so bc divided by a minus d is equals to 0. Here in this equation a is divided by bc, so multiply a on both sides. a multiply with bc divided by a minus d is equals to 0 multiply with a. So a cuts with a, bc minus a multiply with d is equals to ad is equals to 0 multiply with a is 0, a is a 0. So bc minus ad is equals to 0. Here ad in negative form, when put on other side it must be in positive form. So bc is equals to ad. This is our required result. Part 2. 2x plus 3y is equals to 5. x minus y is equals to 2. Our solution is given 2x plus 3y is equals to 5 is our first equation and x minus y is equals to 2 is our second equation. Finding value of x from equation 2. So x minus y is equals to 2. Here
y in negative form, when put on other side it must be added in 2. So x is equals to 2 plus y. By putting value of x in equation 1, 2x plus 3y is equals to 5. So 2 into 2 plus y by putting value of x plus 3y is equals to 5. 2 to the 4 plus 2y plus 3y is equals to 5. 4 plus 2y plus 3y is equals to 5y is equals to 5. Here 4 in positive form, when put on other side it must be subtracted from 5. So 5y is equals to 5 minus 4. 5y is equals to 1. 5 is multiplied with y, so when we put on other side it must be divided. So y is equals to 1 by 5. This is our required result. Part 3. X plus a is equals to b. X square plus a square is equals to b square. Given x plus a is equals to b is our first equation and x square plus a square is equals to b square is our second equation. Finding value of x from equation 1. X plus a is equals to b. Here a in positive form, when put on other side it must be subtracted from b. So x is equals to b minus a. By putting value of x in equation 2, x square plus a square plus b square. So by putting value of x, b minus a whole square plus a square is equals to b square. नाउ गाइज यहाँ पे आप देखें कि ये होल स्क्वायर है और आपने पहले आप फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. वहाँ पे आपकी जो होल स्क्वायर होता है वहाँ पे आप अपना एक फॉर्मूला लगाते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो यहाँ पे अगर हम इस तरह का फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू है b और b हमारी जो वैल्यू है वो है a. तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा हमारे पास b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a square plus a square is equals to b square. So when we put b square on other side it must be subtracted. So minus 2ab plus 2a square is equals to b square minus b square. 2a square minus 2ab, b square cuts with minus b square, so is equals to 0. And when we take common from this 2a common, 2a into a minus b is equals to 0 is our required result. Part 5. X minus m is equals to L. L minus m into x plus a is equals to 0. Now our solution is given. X minus m is equals to L is our first equation and L minus m into x plus a is equals to 0 is our second equation. Finding value of x from equation 1. So x minus m is equals to L. Here m is subtracted from x. When put on other side it must be added in L. So x is equals to L plus m. By putting value of x in equation 2, L minus m, by putting value of x, L plus m plus a is equals to 0. Here L minus m is multiplied with L plus m. So when we multiply these two, L into L plus m minus m multiply with L plus m plus a is equals to 0. L स्क्वायर यहाँ पे क्यों आया स्टूडेंट्स? क्योंकि आपको पता है कि जब हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं. सो एल स्क्वायर प्लस एल एम माइनस एल एम प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल्स टू 0. So plus lm cancelled with minus lm. So L square minus m square plus a is equals to 0 is our required result. Thank you.